જોજો ન્યૂ કંપની Now today we solve 10 inverse sums. 10 inverse sums. First to start 10 inverse sums, I give some formula. First, tan inverse x plus tan inverse y. Whenever you apply the tan inverse formula, at that time first we check our theta. The theta is, multiplication of theta is less than 1 using this formula. Our theta is greater than 1, pi plus formula. And if our xy is equal to 1, so your answer is pi by 2. Answer is pi by 2. So first we take our tan inverse sum. Tan inverse 2 by 11. Tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 upon 24. 7 upon 24. First, we check our theta. 2 by 11 up into 7 by 24, which is less than 1. That's why we are using our first formula. According to first formula, tan inverse 2 by 11 plus 7 upon 24, 1 minus 2 by 11, 7 by 24. So, tan inverse. Now, the denominators are taking LCM. Denominators are same, so which is cancel out each other. So, ये आ जाएगा हमारा 48 plus 77 upon 264 minus 14. So, we get tan inverse 48 plus 77, 125. 264 minus 15, which is 250. Which is cancel out each other. So tan inverse 1 upon 2. Tan inverse 1 upon 2. This is our answer. Now we take another sum of tan inverse of 3 terms. तो सेकेंड वन है हमारा tan inverse 1 by 5, tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 3 minus tan inverse 1 upon 7. Tan inverse 1 upon 7. Now, here there is a 3 terms of tan inverse. First we solve our 2 terms. Now, to solve, first check out our theta, which is less than 1. It is compulsory to write 2 by 11 into 7 by 24 less than 1. It is compulsory to write. So, tan inverse 1 upon 5 plus 1 upon 3, 1 minus 1 upon 5, 1 upon 3. We write minus tan inverse 1 upon 7. Here our theta 1 upon 5 into 1 upon 3 less than 1. So now again we are taking LCM. Tan inverse. Now 5 3s are 15. Now taking LCM, denominators
5 upon 15 minus 4. 15 minus 1. 15 minus 1 minus tan inverse 1 upon 7 remain as it is. So we get tan inverse 8 upon 40. 8 upon 40. Tan inverse 1 upon 7. Again, our here 2 upon 8 upon 14 and 1 upon 7, which is less than 1. But in this term, the sign between these two terms is negative. So our another formula, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y 1 plus xy. 1 plus xy. So now, which is tan inverse 8 by 14. तो ये 8 by 14 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 2 4 4 2 8, 7 by 4 by 7. So 4 upon 7 minus tan inverse 1 upon 7. Again, which is similar to less than 1. So tan inverse 4 by 7 minus 1 upon 7 upon 1 minus 4 by 7 1 upon 7. Again we write 4 upon 7 1 upon 7 less than 1. Less than 1. Now simplifying this, we get again the denominators are same. So no need to take LCM in numerator. So tan inverse 3 by 7 upon, ये आ जाएगा 49 minus 4. 49 minus 4 upon 49. So we get tan inverse 49 minus, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे बीच में, ये प्लस नहीं, ये माइनस और ये प्लस. सो वी गेट 1 minus 4 3 by 7, 1 plus 49 plus 4 which is 53. 53 into 7, ये हो जाएगा 7 7 जा. सो tan inverse 21 by 53. 21 by 53, which is our answer. So here we take two types of sum. In first terms there is 2 terms of tan inverse, and in second terms we take similarly 3 terms, and the last term has a minus sign. The last term has a minus sign. Okay. Now we take another sum. Which is related to tan inverse. But slight different. There is one constant term. Into one of these tan inverse term. So what we do at the time of when one of constant term comes with tan inverse, So for that, now our third sum, tan inverse 1 upon 3 plus 1 by 2 tan inverse
1/7, 1/3 plus 1/2, tan inverse 1/7. Now, as you see, there is a 1/2 term in multiplication of this. At that time, you have to, ऐसी कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो व्हाट वी डू, तो फर्स्ट वी taking out 1/2 as a common. So whenever you take 1/2 as common, it becomes 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7. सिंपली ये याद रखना है कि अगर ये 1/2 आया या फिर 2 आया तो कुछ भी आया, फर्स्ट we take out common, so we get 1/2 into 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7. Tan inverse 1/7. Now we add another. अब how to solve this term? How to solve this term? तो again we write tan inverse 1/3 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan inverse 2 into tan inverse 1/3 है. सो हम फर्स्ट जैसे हमको पता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 tan inverse 1/3 है, so we write tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 remain as it is. अब कोई बोल रहा है कि मैम देयर इज एनी फॉर्मूला, अगेन वी सिंप्लीफाई, फिर ये जो आ जाएगा उसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे. बट आई हैव अ सम फॉर्मूला विच इज, अगर आपके पास 2 tan inverse 1/3 है तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x 1 minus x square. 1 minus x square क्या हो गया, जो थीटा था इसे 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 minus थीटा स्क्वायर 1 minus, तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग. सो 1/2 ये आ जाएगा हमारा. डोंट राइट दिस स्टेप्स, नो नीड टू राइट दिस स्टेप, वी डायरेक्टली डू दिस स्टेप हियर. तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 2 tan inverse x है तो 2x, तो व्हाट इज अवर x 1/3, व्हाट इज अवर x 1/3 अपॉन 1 minus x square, so 1/3 x square tan inverse plus tan inverse 1/7 remain as it is. So we get 1/2 tan inverse ये आ जाएगा हमारा 2/3 अपॉन 1 minus 1/9 plus tan inverse 1/7. So we get 1/2 tan inverse, ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 into 9 minus 1 which is 8 into ये 3 है वो डिनोमिनेटर में, 9 go into न्यूमरेटर्स प्लस tan inverse 1/7. Now 1/2 again 1/2 remain as it is. tan inverse ये आ जाएगा हमारा 3 3s are 9 और ये आ जाएगा 2 4s are 8, तो विच इज 3/4 प्लस tan inverse 1/7. So 1/2 again doing the same method,
Now check out first theta which is less than 1. So applying our first formula, tan inverse 3 by 4 plus 1 upon 7, 1 minus 3 by 4, 1 upon 7. So first we write 3 by 4, 1 upon 7 less than 1. Don't forget to this. 1 upon 2. Tan inverse first. Now again we take LCM. 7 4s are 28 minus 3. So 1 upon 2. Tan inverse 25 upon 25. So 1 upon 2. Tan inverse 1 which is pi by 4. So our answer is pi by 8. Our answer is pi by 8. See. See here. Please see the sum. Okay. Now we take another sum. Now we take another sum related to cos inverse. So first we take our fourth sum sin inverse 3 by 5 plus cos inverse 4 by 5. Okay. So some student says, "Ma'am, we have no formula for sin inverse and cos inverse. What we'll do?" तो अब ऐसे क्या करेंगे? You don't have any formula related to sin inverse and cos inverse. So whenever you have a trigonometric inverse function which is other than tan inverse, first convert the given function into tan inverse form. After that, simplify according to this formula. So how we get tan inverse? So first, using Pythagoras, whenever you simplify this kind of sum in a subjective part, first you have to mention how to get tan inverse term. Other than, if you don't write, half marks will be कट. तो हाउ टू गेट, ये कैसे आ जाएगा? ये देखो हमारा, ये ले लेते हैं हम लोग थीटा इसके लिए. तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 5. सेम एज फॉर दिस टर्म, ये हो गया थीटा, ये 4, ये 1, 5. नाउ वी नो our Pythagoras triplets. We know our Pythagoras triplets, which is 3:4:5. So our hypotenuse is always 5. So this is 4 and this is 3. So now for this term, from sin inverse 3 by 2, 5, we get tan inverse 3 by 4. Now from this term, again we get tan inverse 3 by
tan inverse 3 by 4. So we get both the formula, both the term same as similar. तो अगेन देखो ये क्या आ जाएगा, अगेन ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan inverse 3 by 4. Yes, and it is easier to solve using our last formula. 2 tan inverse is equal to tan inverse 2x 1 minus x square. So applying this formula we get tan inverse 2 into 3 by 4 1 minus 3 by 4 square. So it is tan inverse, ये कैंसल आउट हो गए 2 2 सा 4 आ जाएगा, या फिर इट विल बी रिमेन एज इट इज, ये 4 रिमेन एज इट इज 2, ये ऐसे रखते हैं तो ये आ जाएगा 3 सा 2 3 सा 6 अपॉन 4 है, इसको नीचे लिख देते हैं, बाद में लिखते हैं 3 by 4 और ये आ जाएगा 1 minus 9 by 16, 1 minus 9 by 16. So we get tan inverse 6 upon 4 into ये 16 minus 9, 16 minus 9 क्या आ जाएगा हमारा 7 और ये 16 ऊपर आ जाएगा तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, तो which is our answer tan inverse 24 upon 7, 24 1 upon 7. Sometimes they ask, go ahead, our answer, they want to our answer in cot inverse form या फिर another form which is cos inverse, sin inverse, extra another than tan inverse form. At that time again we using Pythagoras theorem and try to get the given option. Suppose they ask us which is our answer. Now after that I take some another sum with options. In that sum we get another function which is different from tan inverse. So what we are doing at that time, that I explain. अब क्या आ जाएगा देखो, अब एक और सम ले लेते हैं 2 cot inverse 2 fifth sum 2 cot inverse 4 plus cosec inverse 5 by 3. 2 cot inverse 2 cosec inverse 5 by 3, cosec inverse 5 by 3. Now here the both the terms which is not in the form of tan inverse. First we try to get tan inverse form using Pythagoras triplets. तो first ये देखो cot inverse है which is directly converted into trigonometric tan inverse form which is ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली we get 2 tan inverse 1 upon 2 plus for this term cosec inverse 3 by 5. So again we use Pythagoras triplet for cosec inverse as theta. ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस टर्म, ये अपोजिट, तो अगेन Pythagoras triplets 3 by 4. So we get tan inverse is equal to 3 by 4. Now
The first term has to apply the last formula directly. So 2, 1 by 2, tan inverse 2 into 1 by 2, 1 minus. Now I squaring the theta directly, 1 upon 2 whole square. That's why we get 1 by 4 plus tan inverse 3 by 4. So tan inverse 2 cancel out each other. So 1 upon 4 minus 1, 3 by 4 plus tan inverse 3 by 4. So tan inverse 4 by 3 plus tan inverse 3 by 4. Now again we get two terms of tan inverse. But students क्या बोलेंगे, मैम it is so easier. Now again simplify using the first formula. But I always say first check out the theta. Here our theta, which is not less than 1, but it is equal to 1. Our theta, देखो 3 by 4 into 4 by 3 is equal to 1 is equal to 1. यस मैम, ये तो हो गया हमारा. तो क्या करेंगे, तो देखो xy बेस देन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यू हैव गेट अ डायरेक्ट आंसर विच इज पाई बाय 2, विच इज पाई बाय 2. तो पाई बाय 2. नाउ you understand the importance of checking our theta first. Checking our theta first and always write the reason why you are using this formula. So it is important to write the reason and Pythagoras triplets. Okay. Now please see carefully. एक बार ये हो जाए तो tan इन्वर्स से अब जो भी सम्स आते हैं सिमिलर टू tan इन्वर्स आते हैं. लेकिन कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम अभी ये पाई वाली फॉर्मूला तो आपने यूज़ भी नहीं की है, तो वो एक सम दिखाओ. तो वो भी दिखा देंगे. तो नाउ वी टेक अनदर सम विच इज रिलेटेड टू पाई प्लस फॉर्मूला. Pi plus formula. So for that I take some another sum. उसके लिए हमारे पास सम है. नाउ our sixth sum cot inverse 1 upon 2 plus cot inverse 1 upon 3. Cot inverse 1 upon 2, cot inverse 1 upon 2. Now for that term, for this type of sum, first, as I told you before a previous sums, according to that, first convert the given function into tan inverse form. So it is tan inverse 2 plus tan inverse 3. Tan inverse 2 plus tan inverse 3. Now, as I say earlier, our first step to check out our theta, 2 into 3, which is 6. Oh man, yes, which is
greater than 1. So at that time you will get a greater than 1. You will use our second formula, which is pi plus tan inverse. Pi plus tan inverse. So pi plus tan inverse 2 plus 3, 1 minus 2 into 3. Why? Because 2 into 3, which is 6, which is greater than 1. Which is greater than 1. So for that, I plus tan inverse 3 plus 2 plus 3 5, और ये आ जाएगा 1 minus 6. So pi plus tan inverse 5 upon minus 5. So pi plus tan inverse minus 1. Pi plus tan inverse of minus theta. So minus tan inverse 1. Or tan inverse 1 is pi by 4. So we get 4 pi minus pi, 3 pi by 4, which is our answer. Which is our answer. Which is our answer. So we use all the formulas. We used all the formulas related to tan inverse. I am doing all the sums. All the sums. Please check. Please check. तो ये हमारे tan इनवर्स के रिलेटेड जो हमने बोर्ड पे जो 5 फार्मूलाज लिखी है उसके रिलेटेड के सभी सम्स हो गए हमारे, सभी सम्स। अब क्या, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर टाइप्स ऑफ सम, अनदर पैटर्न वाले सम लेंगे, अनदर पैटर्न वाले। उसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अभी जो मैं दिखा रही हूँ उसके सम के लिए आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज विच कम्स इन योर 11th स्टैंडर्ड, इट्स रिमेंबर। तो क्या क्या आई थी? कोई बोल रहा है मैम मुझे तो याद भी नहीं है। ओके, डोंट वरी। तो आई एक्सप्लेन हियर। तो फर्स्ट अब की साइन ले लेते हैं। तो यू हैव अ साइन 2 theta formula. There are so many formulas, but I show some of the formulas sin 2 theta. तो क्या है? 2 sin theta cos theta. Theta is half. Theta is half. There is no another formula of sin 2 theta. Now, for sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta. मैम ये क्यों लिख रहे हो? तो उसका यूज आएगा, कहाँ पे आएगा वो हम बाद में देखेंगे। Now go for cos 2 theta formula. तो cos 2 theta has 3 formula. Cos 2 theta has 3 formula. Cos square theta minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, and 1 2 cos square theta plus minus 1 minus 1 2 cos square theta minus 1। ये हो गई cos 2 theta वाली फॉर्मूला। Now cos 3 theta, cos 3 theta. So what is cos 3 theta formula? So cos 3 theta has 4 cos cube theta minus 3
कॉस थीटा। अभी ये लिखते हैं, जैसे जैसे दूसरी फॉर्मूला आती जाएगी आई विल राइट ऑन द बोर्ड एंड शोइंग। और एक फॉर्मूला देख लेते हैं बाद में। फर्स्ट ट्राई टू रिलेटेड दिस टाइप ऑफ सम। सपोज आई हैव अ सम, एक वन MCQ, our seventh sum. Sin if sin inverse x is equal to y, mod of x is less than 1 upon root 2, then sin inverse 2x under root 1 minus x square is equal to क्या है? And what is your options? Option A 2y, option B minus 2y, option C pi minus 2y, option D 2y minus pi, 2y minus pi। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, तो ये ले लेते हैं। तो कैसे करेंगे? गिवन क्या है हमारा सॉल्यूशन? गिवन क्या है? sin inverse x equal to 1, therefore we get x is equal to sin y, x is equal to sin y। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो और दूसरा क्या दिया है? sin इनवर्स 2x 1 minus x square। Now using our equation 1, putting value of x, sin inverse 2 sin y under root 1 minus sin square y। So sin inverse 2 sin y 1 minus sin square y, which is under root cos square y। So here we write directly cos y, because यहाँ पे हमको मॉड्यूलस ऑफ x दिया है 1/2, 1/√2। Why we write here directly? Here mod of x sin y x is equal 1/√2 है। सो ये क्या आ जाएगा? -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2, 1/√2। अब x है तो x के लिए हमको क्या चाहिए? साइन y या फिर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। वी वांट y हियर, सो y के लिए क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स -1/√2 विच इज -π/4 y π/4। So it comes in sin inverse range, so थीटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो वी राइट हियर डायरेक्टली cos y। अब देखो ये क्या हो गया? वो हमारी फर्स्ट फॉर्मूला हो गई। 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta। So here we write sin inverse sin 2y, sin inverse sin 2y। Again you don't write directly 2y, तो क्या करेंगे? हमको अगेन रेंज में चाहिए तो यहाँ से ही तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -π/2 लेस देन 2y लेस देन π/2, which is also in the range of sin inverse। So that's why we get ये आ जाएगा 2y, which is your option A, 2y। देख लो एक बार
Okay, now we try to solve another example. Solve another example. Now I write here eighth one, cos inverse x is equal to y. 0 less than x less than 1. Then cos inverse 2x square minus 1 is equal to 2x square minus 1 is equal to, or again the option is given. फर्स्ट है हमारा 2y, बी है -2y, ऑप्शन सी सेम एज 6, सेम एज ऑप्शन विच इज गिवन इन 6, 7. So now for the 8th one. First, cos inverse x is equal to y. That's why we get x is equal to cos y. Okay, so it is a range of cos y. 0 less than x less than 1 में है सब कुछ. तो ये देखो अगर रेंज में है तो you can put the directly. Now cos inverse 2x square minus 1 cos inverse x is replaced with cos y, so cos square y minus 1. oh yes मैम देखो ये हो गया हमारा 2 cos square theta minus 1, so we write cos 2 theta, so we get cos inverse 2 cos square y minus 1 cos 2 theta. थीटा क्या हो रहा है डबल, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2y cos 2y. अगेन ये सब रेंज में है तो ये भी रेंज में ही आएगा. सो हियर वी राइट डायरेक्टली 2y. हियर वी राइट डायरेक्टली 2y. Okay. Now go for another sum. Go for another sum. Ninth sum, cos inverse y cos inverse x is equal to y 1/2 less than x less than 1. Then cos inverse 4x cube minus 3x is equal to, ऑप्शन है हमारे 3y minus 3y, pi minus 3y and 3y minus pi. 3y minus pi. Now try to solve this. Again we are doing similarly. Cos inverse x is equal to y, x is equal to cos y. Now equation 1, cos inverse 4 x cube है डायरेक्टली cos cube y minus 3 cos y. So cos inverse cos 3y, कौन सी फॉर्मूला यूज की हमने, लास्ट वन
last one. So 3y, which is 3y directly, which is 3y directly. तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैम चेक करो ना ये है कि या नहीं, रेंज में है या नहीं है. तो देखो क्या लिखा है, 1/2 लेस देन x लेस देन 1. वी वांट cos inverse x here, cos inverse x. सो फॉर दैट cos inverse x के लिए क्या आ जाएगा? तो cos inverse 1/2 कहाँ पे आएगा? pi/3 less than cos inverse x is replaced with y less than cos inverse 1. वहाँ कहाँ पे मिलेगा 1? उनको 0 पे, which comes in first quadrant. So pi less than 3y less than 0, which are in range of cos inverse 0 to pi. So ये 3y हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3y हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. Now going to next sum, going for the next sum, 10th one. ऐसी ही फॉर्मूला लेते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी है. दूसरी जो फॉर्मूला है रिलेटेड टू tan इनवर्स वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू y minus 1/2 less than or equal to x less than or equal to 1/2. Then sin inverse 3x minus 4x cube is equal to, again the given option is same as ninth one, same as 9, same as 9. तो ये क्या आ जाएगा? नाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट. व्हाट इज गिवन? sin inverse x is equal to y, that's why x is equal to sin y. Now for that sin inverse, putting the value of x here directly, so 3 sin cube y minus 3 sin y minus 4 sin cube y. So which is our second formula, sin of 3 theta. According to that we get sin of 3y, sin 3y. Now if you want to check out तो चेक कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट वांट टू चेक आउट तो यहाँ पे देखो -1/2 है, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 1/2. सो साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2, विच इज द रेंज ऑफ डोमेन ऑफ हमारा साइन इनवर्स का. तो इट्स ऑलरेडी कम्स इन रेंज, तो वी राइट हियर 3y डायरेक्टली. कोई कह रहा है 3y से मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हो आप लोग. तो यू विल गेट -3π/2 3/2. अगेन यू गेट अ सेम क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो विच इज इन रेंज. ये हो गया हमारा 3y. देख लो एक बार, आप देख लो. अब जो भी सम है ये हमने लिए हैं, जो मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखी है, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin cos 2 थीटा एंड cos थीटा, रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सम. इन नेक्स्ट लेसन आई विल टेक tan इनवर्स के फॉर्मूला है. सो वी हियर एंड द मीटिंग.